Hello friend, we start with the electricity in this chapter 3. We start with the electric current. So whenever there are a free charge or charge in a motion constitute an electric current. Such occurs naturally in many situations like that a lightning in one such phenomenon which charge flow from cloud to earth through the atmosphere. Atmosphere is the medium, sometime with a disastrous result है ना. कई बहुत सारी हानियाँ होती हैं क्लाउड से. ये आपके क्लाउड्स हैं. तो क्लाउड से डायरेक्ट अर्थ पर, ये आपका अर्थ मान लेते हैं हम. तो डायरेक्ट इसमें मीडियम क्या हो गया? एटमॉस्फेयर. ये क्या है? मीडियम. आपका मीडियम क्या है? एटमॉस्फेयर इज द मीडियम. So the flow of charges in lightning is not a study, but in everyday life we see many devices where charge flow in a steady manner, like water flowing smoothly in a river is a steady manner. A torch and a cell-driven clock are the example of such devices. So we now come to the definition of electric current. Imagine a cell area held normal to the direction of flow of charge. Both positive and the negative charges may forward and backward across the area. In the given time interval t, let q plus be the net amount forward minus backward of positive charge that flow in the forward direction across the area. Similarly, q minus be the net amount of negative charge flowing across the area in the forward direction. The net amount of charge across the area in forward direction is equals to क्या हो जाएगा? नेट अमाउंट क्या होगा? q is equal to positive ions net amount q plus minus q minus. So this is the property for auto T for the steady current. Now come to the next one. So I is equals to q by T is defined as the current across the area in the forward direction, and it implies a current in the backward. So current are not always steady, and hence more generally we define the current as follows. Let delta q be the net charge flowing across a cross section of conductor during the time interval delta t, okay, between time t and t plus delta t. So the current at the time t across the cross section of the conductor is defined as the value of the ratio of delta q to the delta t and limit tends to 0. Means current is defined as IT is equals to limit delta q by delta t. So in SI unit the unit of current is ampere. क्या unit होती है SI unit में? Ampere होती है. So ampere is defined through the magnetic effect of current that we will study in the following chapter. So ampere is typically the order of magnitude of the current in domestic appliances. An average lightning carries current of the order of 10 of 1000 of amperes, and the other extreme current in the our nerves in micro amperes. So current का इतना रेंज हो सकता है, जो nerves में जो हमारे currents है वो micro amperes में है, और जो lightning पर thunderstorm पर जो current होता है वो thousands of ampere होता है ना. So अभी हमारा now next is electric currents in conductor. The electric charge will experience a force if an electric field is applied. If it is free to move, it will thus move, contributing to the current. In the nature, free charge particle to exist like in the upper strata of atmosphere called the ionosphere. However, in atoms and molecules, negatively charged electrons and positively charged nuclei are bound to each other and thus not free to move. The bulk matter is made of many molecules, and a gram of water, for example,
contain a 10 to the power 22 molecules. These molecules are so closely packed that the electrons are no longer attached to the individual nuclei. So in कहने का मतलब है कि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे करंट नहीं फ्लो होगा. मॉलिक्यूल्स में एटम्स में ये दे आर बाउंडेड रहते हैं, तो उनको फ्री है जब तक वो नहीं है. कंसीडर देयर इज अ केस वेयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट. The electrons will be moving due to the thermal motion during while they collide with the fixed ions. Electrons colliding with an ion emerge with the same speed as before the collisions. नेक्स्ट चलते हैं. तो यहाँ एक कंडक्टर में बता रहे हैं किस तरीके से होता है. चलिए देखिए, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस टू सच अ पीस ऑफ कंडक्टर. ये आपका एक पीस ऑफ कंडक्टर है, ये वाला. This is a piece of conductor. If an electric field is applied, to focus our thoughts, imagine the conductor in a shape of cylinder of radius r. Suppose we now take the two thin circular disc of dielectric of same radius and put positive charge plus q distributed on the one disc, this one, and minus q on the other disc. We attach the two discs on the two flat surface of cylinder and the electric field will be created, and it is directed from the इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव टू नेगेटिव. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव. द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू दिस फील्ड टुवर्ड. इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे फ्लो? इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज ऑलवेज द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस क्यू की तरफ होंगे. दस will thus move to neutralize the charge. The electrons, as long as they moving, will constitute an electric current. Hence, in the situation considered, there will be a current for a very short while and no current thereafter. So we can say that the mechanism while maintain a steady electric field or cells, batteries, that we shall study later in the chapter. Okay, in this next section we shall study the steady current that result from a steady electric fields in conductor. Now we have taken, suppose that we have taken one conductor. If there are two cases illustrating the result, R is equals to rho L by A for the rectangular slab, length L and area of cross section A. Suppose that there are two rectangular slab is connected in the series, and here there are two one rectangular series, one rectangular slab is divided into the two halves. There are two cases B and C. So the basic law regarding the flow of current was described by the G.S. Ohms in 1828. The Ohm's law states that V is proportional to I and V is equal to Ri, where the constant of proportionality R is called the resistance of the conductor. What is the R is called? R is called the resistance of the conductor, and the SI unit of resistance is ohm, and it is denoted by this symbol. The symbol R, the resistance R not only depend on the material of the conductor but also on the dimensions of the conductor. The dependence of R on the dimensions of the conductor can easily be determined as follows. Consider a conductor satisfying equation 3.3 to be in the form of slab, length L, cross section area 3.2a, this one, sorry, this one. Length is L and area is A. Imagine placing two such identical slabs side by side so that the length of combination is 2L. The current flowing through the combination is same as that flowing through either of the slabs. If V is the potential different across the end of first slab, then the V is also the potential difference across the end of second slab. Hence, since the second slab is since the second slab is identical to the first and the same current is flowing, I flow through the both, with the potential difference across the end of the combination is clearly the sum of the potential difference across the two individual slab. क्योंकि V और V कितना हो गया? 2V. So the current through the combinations is I and the resistance of the combination is RC. So RC is equals to 2V by I by Ohm's law. So that is 2R. So this V by I equals to R, the resistance of the either slab, thus doubling the length of the conductor doubles the resistance. अगर आप कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा.
इन जनरल देन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अभी हमने क्या किया, नेक्स्ट इमेजिन द डिवाइडिंग द स्लैब इनटू टू by cutting at the lengthwise so that the slab can be considered as the combinations of the two slabs of length L but each having a cross sectional area of A by 2. So for a given voltage V across the slab, if I current is flowing through the entire slab, then clearly the current flowing through each of the two half slab is I by 2. Since the potential difference across the end of the half slab is V, the same as across the full slab, so the resistance of each of the half slab is R1 is V divided by I1 by 2, so that is 2 into V1 by I, that is 2R. So what क्या रिजल्ट आया, मतलब आपका रेजिस्टेंस फिर से 2R हो गया, जस्ट हाफिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर डबल्स दी रेजिस्टेंस। अगर आप एरिया को हाफ करोगे तो भी रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, और अगर आप उसको लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के, और एरिया के हो गया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे 3.5 को और 3.7 को, इनको कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। यहाँ पर रो जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो वो जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल्स पर, एंड दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। यूजिंग द लास्ट इक्वेशन ओम्स लॉ रेफर V इक्वल्स टू IR, तो हमने यहाँ पर I वैल्यू रखा R का। तो द करंट पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल I बाय A इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय J। तो करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, J से, और इसकी डेफिनेशन होती है I बाय A। द SI यूनिट्स ऑफ द करंट डेंसिटी इज एरिया पर मीटर स्क्वायर। Furthermore, if E is the magnitude of the uniform electric field in the conductor whose length is L and the potential difference V across ends is using EL, so the last equation reads, इसको देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन जो हमारी लास्ट वाली, EL is equals to J sigma L J rho L, so E is equals to J rho. The above relation for the magnitude E and J can be indeed be the cast in vector form. So the current density, which we defined as a current throw per unit normal to the current, is defined as along the E is equals to J rho, or you can write J is equals to sigma E. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो। तो सिग्मा इज द कंडक्टिविटी और रो इज द रेजिस्टिविटी। सो जितना ज़्यादा आपकी रेजिस्टिविटी होगी कनेक्टिविटी उतनी ही कम होगी, या फिर जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी कनेक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो द ओम्स लॉ इज ऑफन स्टेटेड इन द इक्विवेलेंट फ्रॉम 3.13। अगर यहाँ पर हम करेंगे, सो इन दिस नेक्स्ट सेक्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन्स ऑफ द ओम्स लॉ एज अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हम कह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी कैसे आया टर्म, और ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं 3.5 में। अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, कनेक्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा, क्या होता है, ओके। सो एज रिमार्क बिफोर, द इलेक्ट्रॉन विल सफर कॉलिजन with the heavily fixed ions, but after collisions it will emerge with the same speed but in random direction. If we consider all the electrons, their average velocity will be 0. So यहाँ पर हमने average velocity ली है वो 0 है। Since if we consider all the electrons, their average velocity will be 0 since their directions are random. Thus if there are n electrons, capital N, and the velocity of the ith electrons are 1, 2, 3 and so on of n, it given by Vi, then 1 by n summation I equals to capital N, summation I equals to 1 to capital N Vi is equals to 0. तो consider now the situation when electric field is present. अभी हमने सिचुएशन मानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स एस्लेटेड होंगे पॉजिटिव एंड की तरफ, किससे, A is equals to minus E by m, where minus E is a charge and m is the mass of electrons. Consider against the ith electrons at a given time t. This electron would have at least collision sometime before t. So let Ti be the time elapsed after this last collision. If Vi was a velocity immediately after the last collision, then its velocity Vi at the time t is equals to Vi is equals to capital Vi is equals to small vi plus minus E by m into Ti. So since starting with its last collision,
it was accelerated with an acceleration given by the equation 3.15 for a time interval ti. The average velocity of the electrons at the time t is the average of all vi's. The average of vi's in this equation 3.14 is 0, since immediately after any collision the direction of velocity of an electron is completely random. The collision of electron do not occur at the regular intervals but at the random times. Let us denote by tau the average time between the successive collisions. Now this is the schematic pictures of electron moving from point A to B, another point B through repeated collision, and a straight line traveled between the collision full lines. If an electric field is applied, it is shown by the dotted lines. So you can see here the difference between the solid line and the dotted lines. This BB dash difference is shows the slight drift in direction opposite to the electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में ड्रिफ्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ है. किसका ड्रिफ्ट हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ है. इसको आगे ले चलते हैं. चलिए, तो हमने क्या माना? टाउ टाइम मान लिया. इन सम टाइम लेस देन टाउ. इन अदर वर्ड्स द टी आई इन द इक्वेशन 3.16 विल बी लेस देन टाउ for some or more than tau for some. So as we go through the values of I is equals to 1 to so on of n, the average value of ti then is tau, thus averaging 3.16 over the n electrons at any given time t give us for the average velocity Vd. So Vd is equals to Vi average. Vi average is small vi average minus E by mti average. So that is 0. Vi average is 0 and minus E by m. This ti average is tau. So this is minus E by m by tau. This result is surprising. It tells us that the electrons move with an average velocity which is independent of time, although electrons are accelerated. This phenomenon is drift and the velocity Vd is called the drift velocity. तो कौन सी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं? Vd is equals to minus E capital E by m and tau. So this is the your drift velocity. So you can see that the current in the metallic conductor, the magnitude of the current density in a metal is the magnitude of charge contained in a cylinder of unit area and length Vd. Length is Vd is length is del x is equals to Vd delta t. Okay, so Vd is equals to drift velocity is del x by del t. So because of the drift there will be a net transport of charge across any area perpendicular to the E. So consider a planet area A located inside the conductor such that to the normal to the parallel to the E. So because of the drift in the infinitesimal amount of time del t, all the electrons to left of the area at distance up to Vd delta t would have crossed the area. If n is the number of free electrons per unit volume in the metal, since n delta t Vd a such electrons, since electrons carries E charge and the total charge transported across the area A to the right in the time delta t is minus E a Vd delta t. Delta is directed toward the left and hence total transported charge along the E across the area is negative of this. So the amount of charge constituting the area A in time delta t by definition is I delta t. So I delta t is plus minus of any Vd delta t because I is equals to any Vd. So substituting the value of Vd from the equation 3.17, so that is I delta t is equals to E square A by m tau and del E. By definition I is related to the magnitude Jy, I is equals to Ja. So we can put here, so that is J is equals to Ne square by m tau E. So the vector J is parallel to the E, hence we can write equation J is equals to Ne square by m into tau E. So comparison this equation 3.13, so that the equation 3.22 is exactly the Ohm's law. We define conductivity sigma as Ne square by m into tau. तो sigma क्या आ गया आपका? What will come sigma? Sigma is Ne square by m into tau. So we thus see that a very simple picture of electrical conduction reproduced Ohm's law. We have of course made assumption that tau or n are constants independent of E. So now come to this numerical problem.
Estimate the average drift velocity of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1 into 10 to the minus 7 meters square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atoms contribute roughly 1 conduction electrons. The density of copper is 9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube and its atomic mass is 63.5 U. Second है compare the drift speed obtained above with the thermal speed of copper atom at the ordinary temperature. दूसरा है speed of propagation of electric field along the conductor which cause the drift motion. So now we come to the solution. The direction of the drift velocity of conduction electron is opposite to the electric field direction. तो हमेशा ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है ना. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट है, सपोज दैट लेफ्ट टू राइट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ होगी आपकी, राइट टू लेफ्ट. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोज में मूव करते हैं, किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोज में. ठीक है. सो द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल. सो द ड्रिफ्ट स्पीड वी डी इज गिवन बाय I by NEA. This you must remember. I current is equal to N E A NEA VD. You must remember this. So VD is equals to I by NEA. So E is equals to 1.6 10 to the minus 19. A is equals to 1 10 to the minus 7. I is equals to 1.5. The density of conduction electrons N is equal to the number of atoms per cubic meter. So a cubic meter of copper has a 9 into 10 to the power 23 kilogram. Since 6 into 10 to the power 23 copper atom has a mass of 63.5 gram. So N कैसे निकलेगा, ये टोटल नंबर ऑफ जो कॉपर एटम्स हैं इसमें डिवाइड कर देंगे इसके मास का और मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूबिक मीटर हैज़ ए मास 9 into 10 to the power 3. So it will come N is equals to 8.5 10 to the power 18. So which gives VD. Now put all the values in this 1.1 mm per second. अब दूसरा है at the temperature T the thermal speed of copper atom of mass m is obtained from expectation 1 by 2 mv square is equals to 3 by 2 kbt and thus typically in order of root kbt by m where kb is the kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और कितना होता है 2 into 10 to the power 22 meter per second. So this figure indicates the random vibrational speed of copper atoms in a conductor. Note that the drift speed of electron is much smaller, about 10 to the minus 5 times the typical thermal speed at the ordinary temperature. अगला है an electric field traveling along the conductor has a speed of an electromagnetic wave 3 into 10 to the power 8. So the drift speed is in the comparison extremely small by a factor of 10 to the minus 11 because वो mm में है, 1 mm में, तो कितना हो गया 1.1 mm, 10 to the minus 11 से उसकी स्पीड कम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड से, है ना. अगला क्वेश्चन है in example 3.1 the electron drift speed is estimated to be only a few mm second for a current in the range of few amperes. How then is current established almost the instant a current circuit is closed. चलिए, तो electric field is established throughout the circuit almost instantly with the speed of light, causing at every point a location electron drift. The establishment of current does not have to wait for the electron from one end of the conductor traveling to the other end. However, it does take a little while for the current to reach it the studied value. तो electrons को एक सिरे से दूसरे सिरे पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो दिस इज स्टडी वैल्यू तक आने के लिए थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है. अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन. व्हाई देन डू द एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्ड स्टडी. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपोजिट लगता है, इनका कहना है, लेकिन फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्यों ले लेते हैं. चलिए, तो क्या होता है, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं होता इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अंटिल इट्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल. तो इट लूजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कॉलिजन बट स्टार्ट टू द एक्सेलरेटेड एंड इंक्रीज ड्रिफ्ट स्पीड again only suffer a collision again
एंड सो ऑन द एवरेज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स ए ड्रिफ्ट स्पीड। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन तो एक्सीलरेट नहीं करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा तो वो किससे कोलाइड करेगा, आयन से कोलाइड करेगा, पॉजिटिव आयन से, तो वो अपनी लूजेस ड्रिफ्ट स्पीड को लूज कर देगा वहाँ पर, फिर वो एक्सीलरेट होगा, फिर टकराएगा, फिर लूज कर देगा, तो ऑन एन एवरेज क्या हो जाता है, वो ड्रिफ्ट हो जाता है। तो इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल and the electron charge is small, how can we still obtain a large amount of current in the conductor? अगर ड्रिफ्ट स्पीड भी स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज भी स्मॉल है, तो फिर ज़्यादा करंट कैसे आ रहा है कंडक्टर में? सिंपल बिकॉज इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉमरस, जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻29 है ना, इसलिए। When electron drift in metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metals are moving in the same direction? No, ऐसा नहीं होता है. The drift velocity is superposed over the large random velocities of electrons. Are the path of electrons straight line between the successive collisions in absence of electric field and presence of? देखिए, in the absence of electric fields paths कैसी होती हैं, straight lines होती हैं. In the presence of electric fields कैसी होती हैं, curves होती हैं, generally कर्व्स होती हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोबिलिटी. सो एज वी हैव सीन, कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम द मोबाइल चार्ज कैरियर्स. इन मेटल्स दीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन. मेटल्स में यही मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आयनाइज्ड गैसेस में यही दे आर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं. तो इम्प्रूव्ड क्वांटिटी इज द मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट electron fold is the SI called the mobility. So the SI unit of mobility is meter square per volt second and is the 10 to the power 4 of mobility in practice units. Mobility is positive, thus we have Vd is equals to E tau E by m. Okay, Vd is equals to क्या हो गया, E tau E by m. The next one is so mu is equals to Vd by E. Mu is equals to Vd by E, or you can write as E tau by m. There's a tau is the average collision time for the free electrons. तो फ्रेंड्स यहाँ तक 3.5 तक हमने इस चैप्टर 3 के पहले लेक्चर में पढ़ा है. इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक आप इसे पढ़िए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे ड्रिफ्ट होता है, हाउ इज ड्रिफ्ट इज पॉसिबल, कंडक्शन कैसे होता है. सो इसको पढ़िए. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको 3.6 से कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स.